Okay, suppose arc is there, general arc is there. मुझे suppose theta is 60 degrees. This is a distance. Current is I. I want to find the magnetic field at this point. वो find करो. Magnetic field at वो is how much? This is general arc. It is not semicircle, quadrant, or something. So general arc का formula मालूम है ना? Mu naught by 2 into I by A is the radius into theta by 2 pi. Sir, mu naught I by 12A. Mu naught I by 12A. by 12. Yes, correct. देखो theta should be in radians. Theta should be radians means 60 को in terms of radians में I can write as pi by 3. Substitute करो. Mu naught by 2 into I by A into pi by 3 into 2 pi, right? So pi cancel 1 by 6. So therefore net magnetic field कितना होगा? Mu naught by 2 into I by A times 1 by 6. This is answer. What? Chalo. Now since you know the straight wire, infinite wire, semi infinite wire, direction मालूम है ना? Direction कैसे आएगा? Tell me. Here the magnetic field is outwards or inwards? Tell me. This arc के वजह से what is the magnetic field direction? Inwards. Curl the fingers in the direction of current and thumb indicate the direction of magnetic field. So inwards है. पर straight wire का different है, इसका अलग है, इसका अलग है. देखो इसमें तो thumb indicate direction of current and curled fingers indicate direction of magnetic field. This is for straight wire. Here उल्टा हो जाएगा. Because we cannot put thumb, right? So curled fingers indicate direction of current and thumb indicate direction of magnetic field. Inwards. Okay. So magnetic field is a vector quantity. आपको हमेशा based on the direction only we have to add or subtract, it depends on the direction. Should be very careful, right? चलो. Now mixing together पूरा करने वाला है. करो. Find the magnetic field at point O of the following cases. देखो, this is radius A, this is radius B. Current I is flowing in the wire. He is telling to find सभी current carrying wire के वजह से magnetic field at वो चाहिए. Okay. Here how many wires are there? How many wires are there? देखो. 4, 1, but 2, 2 we don't 3, consider because there are 4. So 4 wires are there. Straight wires are there. Either. So name करो. 1, 2, 3, this one, and 4. So current is flowing like this, like this, like this, and like this. Okay. So tell me, Sriram, because of this finite wire के वजह से, at this point, what is the magnetic field? Because of finite wire, at this point, what is the magnetic field? 0. 0. Very good. Super. So B1, because axis में the magnetic field is 0. So B1 and B3 also 0. मतलब you have to find only 2 circular semi-circular wire के वजह से only magnetic field find करेंगे. Find करके बोलो net magnetic field बोलो at point वो चाहिए. Semicircle formula मालूम है ना? Mu naught by 2 into I by A into 1 by 2. Sir, mu naught I by 4 into 1 by A minus 1 by B. Yes, correct.
देखो श्रीराम, इस वायर के वजह से, स्मॉल वायर के वजह से, टेल में व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड B2, राइट? हाँ, B2 कितना है टेल में? बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग के वायर की वजह से। टेल में फॉर्मूला क्या है सेमी सर्किल का? V0/2 इंटू I बाई, इसका रेडियस इज हाउ मच, A, इंटू 1/2। बट डायरेक्शन देखो, curl the fingers in the direction of current and thumb indicate direction of magnetic field outwards. So direction is outwards here. Similarly, इस बड़ा सेमी सर्किल का विल ट्राई टू फाइंड, आई कॉल्ड इट एज B4, राइट? हाँ, सो इसको क्या होगा? कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्स है। ओके, नाउ V0/2 इंटू I बाई A टाइम्स 1/2, इनवर्स है। सिंस डायरेक्शन इज ऑपोजिट, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1 माइनस 2 सेकंड करने का, बट बिगर माइनस स्मॉलर करने का, विच इज बिगर? This one, ना, this one, which के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज बिगर? टेल मी श्रीराम। सर बी। इसके वजह से और इसके वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड? सर सेकंड वन, लाइक ए। दिस वन ना, और दिस वन, सेकंड वन ना? सर सेकंड वन। Because smaller the radius, bigger the magnetic field, right? Therefore second minus first करेंगे। So mu0/2 into I by A into 1/2 minus इसका, if you take common you'll get 1/2 into I by A into 1/2। So इधर I magnetic field B, right? This is B4 वाला B, this is B4 वाला B, yes। So if you take 1 by A minus 1 by B आएगा, समझ में आ रहा है? So you should be very careful, formulas यूज करो, डायरेक्शन यूज करो, and try to find the magnetic field। चलो next one find करो। This is a general arc, current is flowing in this, I current is flowing, this is alpha angle में, I want to find the magnetic field at this point O। So इसका radius is A, इसका radius is B। फाइंड करो। फाइंड करो। So here also 4 wires are there, श्रीराम। इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज 0, इसका वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज 0। नाउ आपको दोनों वायर फाइंड करने का, तो जनरल आर्क का फॉर्मूला यूज करके, एंड अल्फा इज रेडियंस ओनली, अल्फा इज इन रेडियंस। Sir, mu0/2 into I into alpha by 2 pi into 1 by A minus 1 by B. दोनों एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा? Subtraction. ये सब्ट्रैक्शन होगा, यस। आंसर नहीं बोल रहे श्रीराम, जल्दी करो। हाँ देख, काम में बैठने से व्हाट इज यूज? टेल आंसर्स, आगे तो बोलो। ओनली वन गर्ल शुड से ना, टेल आंसर्स। सो दिस इज वन वायर है, सेकंड वायर है, बिकॉज इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0। सो B2 कितना है? mu0/2 इंटू I बाई, इसका रेडियस इज B, ओके, इंटू थीटा बाई 2 पाई। सो इसका डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट्स, सो इनवर्ट्स है। So B1 mu0/2 into I by A into alpha by 2 pi। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। खत्म। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी
bigger minus smaller, B1 minus B2, because smaller radius more the magnetic field, right? So common लेके करने का. Next करो. So here one small general arc is there and one more bigger general arc is there. Current is flowing, same current is flowing. I current is flowing here, 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 here. Complete current. इस स्मॉल जनरल आर्क का रेडियंस कितना सबटेंड एंगल है? अल्फा. कैन टेल मी बिगर का सबटेंड एंगल कितना है? 2 pi minus alpha. हाँ, खत्म करो. 2 pi So minus at that center of हाँ, सेंटर circle. वो में चाहिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड. तो इस स्मॉलर आर्क की वजह से कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड बिगर आर्क की वजह से आल्सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स. सो दोनों इनवर्स है अभी. हाँ, साथ ही करके बोलो. दोनों जनरल आर्क है. थीटा फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकंड वन थीटा 2 पाई माइनस अल्फा. So first wire, second wire. Sir, mu naught by 2 into सात्विक 1. सात्विक बोलो. So mu naught into 4 pi I into 2 pi minus alpha by R1 plus alpha by R2. हाँ, डायरेक्शन इज इनवर्स, राइट? फिर हम कितना है, आपको कितना है? पर जनरल आर्क बयట ऐसे बैठो एंजॉय करो, मैं क्या कर सकते हैं बोलो. कुछ पढ़ के नहीं आया, जस्ट कॉपी करने से व्हाट इज द यूज? यू टेलिंग जेई मेंस यू राइटिंग एंड यू नॉट स्टडिंग. ओनली फार्मूला, ओनली चार फार्मूला, ओनली दैट फार्मूला ओनली आई एम आस्किंग. स्मॉल जनरल आर्क के वजह से, फर्स्ट वायर के वजह से, व्हाट इज द फार्मूला? टेल मी. जनरल आर्क के वजह से फार्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू यू? यू नहीं समझ? म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए. दिस इज फॉर सर्किल ऑलवेज. सर्किल का इंटू थीटा बाई 2 पाई. तो इस पर दिस आर्क का सबटेंड एंगल इज अल्फा, सो थीटा के जगह में अल्फा, राइट? एंड डायरेक्शन इज इनवर्ट्स क्रॉस. ओके, एंड B2 म्यू नॉट बाई 2 इंटू इधर ए के जगह में विल टेक एस R2, राइट? R2. नाउ आई बाई हियर R1 सेकंड वायर का. इसका सबटेंड एंगल क्या है? इट इज आल्सो जनरल आर्क. इसका सबटेंड वाला 2 पाई माइनस अल्फा, सो थीटा का जगह में 2 पाई माइनस अल्फा बाई 2 पाई. So direction is inwards. So since दोनों same direction, we have to net magnetic field will be, net magnetic field at O is simply B1 plus B2. सबको ऐड करके कॉमन लेके निकाल देने का. ओके, सो ऑलवेज सेम फार्मूला ओनली. श्रीराम, B0/2 into I by A is a formula for circle. सेमी सर्किल बोलते ए डाल के 1/2 डालो. क्वाड्रेंट मीन्स ए डाल के 1/4 डालो. एंड जनरल आर्क मीन्स ए डाल के अल्फा थीटा बाय 2 पाई. ओके, थीटा शुड बी रेडियंस. ओके, चलो अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आने वाला है. अब देखो, दिस इज इनफाइनाइट वायर, करंट इज आई. नाउ सेम करंट इज फ्लोइंग इन द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस स्मॉलर. आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर. वो मिक्सिंग टुगेदर पूरा करो.
सो एट पॉइंट ओ में 2 वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से, एक सर्कुलर वायर की वजह से, दोनों यूज करो। Sir, चल mu naught by 2 into I by R into 1 plus 1 by pi. या करेक्ट। हाँ सम क्या, नो प्रॉब्लम, बोलो आंसर बोलो। Sir, पर इनफाइनाइट वायर की वजह से व्हाट इज फॉर्मूला? mu naught by 4 pi 4 pi into I by A. 2i by a 2i by r, Sorry. ओके, दिस फॉर इनफाइनाइट। पर सर्कुलर वायर सेंटर में Mu mu naught naught by 2 into I by A. I by a is nothing but r real, okay। so डायरेक्शन चेक करो, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इट इज आउटवर्ड्स, देखो थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल्ड फिंगर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड हियर कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐड करना पड़ेगा, सो सिंपली नेट मैग्नेटिक फील्ड इज b1 plus b2, so mu naught by 2 into I by r, this for wire, circular wire, plus b2 is mu naught by 2 into I by 2i by r। so दोनों सेम डायरेक्शन है, ऐड करने का कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो भैया इसका रेडियस इज r, इधर इधर डिस्टेंस इज आल्सो r ऑन, राइट, सेम। नेक्स्ट चलो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जाएंगे अभी। देखो ये इन्फिनिटी से आ रहा है वायर, तो पहले एक्सिस डिफाइन करो, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कमिंग टुवर्ड्स यू, एक्सिस राइट टुवर्ड्स यू। नाउ हियर इन्फिनिट से आ रहा है इधर, देन अगेन इट इज गोइंग लाइक ए सेमी सर्किल एंड अगेन इट इज गोइंग टू द इन्फिनिटी। मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर वो चाहिए। सो हियर हाउ मेनी वायर्स आर देयर? 3 वायर्स आर देयर, okay। this wire is what? Sriram, tell me, this wire is what? Which wire? Infinite. No, semi Infinite wire नहीं है, semi infinite wire, because infinite से आके जो stop हो गया, semi infinite, and this shape is called as semi circle, and ये वाला this also semi infinite, okay। देखो ये वाला it is parallel to x axis, मतलब see x axis is like this, positive x axis like this। now I cap j cap लगाना पड़ेगा, I cap j cap लगाएंगे, ओके। चलो फर्स्ट कनेक्टर कर दी 1 2 3, ओके। b1 टेल में b1 सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इट इज लाइक दिस, समझ में आ रहा है? द करंट इज गोइंग इनवर्ड्स बिकॉज एक्स एक्सिस ही शोड लाइट, दिस एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उससे पैरेलली करंट इज गोइंग इनवर्ड्स, राइट। हाँ टेल में फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर व्हाट इज द फॉर्मूला? mu naught by 4 pi into I by distance is a only given, this distance is a, because I want to find the magnetic field at this O, right, by a, okay। direction is which direction, which cap will get? think and tell। current is coming into, it is going into the board, ये वाला is coming into the board, right hand thumb rule लगा के tell me which cap will come। this is y axis, z axis, x axis। what is something is telling Y. y and I j k J. okay, you tell me Sadik, सान में बोलो which cap will get in this one। देखो करंट इज गोइंग टू द बोर्ड, ये तो समझ में आया, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है, राइट। हाँ देखो थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एट दिस पॉइंट में कर्ल्ड फिंगर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज गोइंग डाउनवर्ड्स, सो वाई एक्सिस का डाउनवर्ड्स इज माइनस जे कैप, सो इट इज माइनस जे कैप, फर्स्ट वन। नाउ इसका फाइंड करो b2 फॉर सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई, इसका रेडियस इज ए ओनली, ए हाँ इंटू हाफ, राइट, सेमी सर्कल है तो नोटल में आई क्या जे क्या के क्या दिखते हैं। कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सात्विक, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट
एंड So, थंब चेक कर, minus I. माइनस आई कैप, यस देखो, कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो माइनस आई। नाउ सिमिलरली थर्ड वन फाइंड करो, B3। नाउ B3 इज गोइंग डाउनवर्ड्स नाउ, मतलब y का ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये वाला। हाँ, नाउ द सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए, दिस सेमी इनफाइनाइट वायर। हाँ नाउ बोल तो, देखो बोलो, ट्राई करो, विच कैप, करंट इज गोइंग डाउनवर्ड्स नाउ, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। In middle, which cap we have to put? Minus I. Minus 7, देखो, current is going downwards, current thumb indicate direction of current and curled fingers indicate direction of magnetic field, so x axis का opposite direction में minus I cap, so net magnetic field simply add करने का, right, net magnetic field simply add करने का, B1 plus B2 plus B3, I cap J cap terms, whenever they introduce axis we have to use I cap J cap K cap। समझ में आ रहा है how to find the direction? Right hand thumb rule normal for straight wire, circular wire का curled fingers is a current and thumb indicate direction of magnetic field। अब thumb which direction is showing, that direction only we should take। समझता? तो ऐसा क्वेश्चन ओनली मिक्सिंग टुगेदर कंपल्सरी शेप्स में मिलेगा आपको। ये चैप्टर इज वेरी सिंपल चैप्टर, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। इफ यू नो द फॉर्मूलास, आपको कोई भी शेप दे दो, सभी वायर का टुकड़े टुकड़े में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके डायरेक्शन चेक करके सॉल्व करने का, सिंपल। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म वी आर डूइंग। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, and it is going along the z axis. This is positive z axis, this is positive x axis, this is positive y axis. Current is coming, I current is flowing. I want to find magnetic field at this point C, or wo at this point. And since diameter, semicircle diameter is given as r, this is r by 2, this is r by 2. If the z axis ऐसे जा रहा है, means what is the meaning? It is coming towards you along z axis में है। Now find. You can take first wire, second wire and third wire। ये भी ये जा रहे हैं infinity में, okay? ये third wire। Now trying to find the magnetic field at center वो, so B1 find करो। That is a semi-infinite wire, r by 2 distance दूर में I want to find the magnetic field at that point। So what is the formula semi-infinite wire का? Mu naught by 4 pi into I by A। A is how much? Distance is r by 2। हाँ, now direction बोलो, देखते कट, सभी को पूछूंगा, बोलो। Thumb indicates the direction of current and curled fingers indicate the direction of magnetic field। minus J. Minus J ना, why? Tell me। thumb लगाओ, thumb which one? This one you are doing, right? This one। हाँ, इसका thumb लगाओ, which direction आपको? हाँ, तो curled घुमाओ ऐसा, is coming towards ऐसा ना, देखो, it is इधर चेक करो, इस पॉइंट में चेक करो, right? Not here, right? देखो, thumb indicate direction of current, इधर नहीं है, it is coming, it is coming So, outwards। yeah। Outward is z axis। Yeah. ठीक है, ओके। कौन सा पॉइंट में? उसी पॉइंट में चेक करने का, ओके। नो, सेकंड सेमी सर्किल। सो सेमी सर्किल का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई डिस्टेंस इज r by 2 and by into 1 by 2, right?
सर्किल का by 2, right? Now Sriram, tell me which direction you have to put. For semicircle, curl the fingers in the direction of current and thumb indicate direction of magnetic field. Which direction? This is z axis, right? Z axis is coming towards you. Sir, K. K cap. Now B3 फाइंड करो. सेमी इनफाइनाइट वायर, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स ऐसा आ रहा है. ना फाइंड करो. म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई डिस्टेंस इज ऐसा है ना, जेड एक्सिस. आर बाई 2 डिस्टेंस. ना बोलो इसका क्या आएगा. जेड एक्सिस में ऐसा आ रहा है, करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स. मुझे इस पॉइंट में चाहिए. चल में Sir, K. वही देखो, करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. थंब लगाओ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल्ड फिंगर्स एट दिस पॉइंट एंड चेक करो. एंड आर एन दैट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर, राइट? चल में बोलो सर. देखो, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा लगाओ, फिक्स कर दो, थंब को फिक्स कर दो. इज कमिंग टुवर्ड्स यू, राइट? फिक्स कर दिया. एंड कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट. देखो उस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है. बट आर एन दैट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर, राइट? सो परपेंडिकुलर वाला कौन सा है? दिस इज माइनस आई कैप. ओके, माइनस आई कैप. R and magnetic field should be always perpendicular. I told you on that day. DB should be perpendicular to DL and the DB is also perpendicular to R. So जो भी magnetic field है, we should not tell that ऐसा क्रॉस आ रहा है, ये क्रॉस ऐसे जा रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं है. The magnetic field is perpendicular to the radius distance. So that is minus I cap. Okay. So net magnetic field means you have to add all the things. Now last problem करो, देखते हैं. विदाउट हेल्प करके नीटली एग्जैक्ट बोल दो एनी शेप्स का यू कैन सॉल्व. चलो नेक्स्ट वन. देयर इज ए बी इज ए फाइनाइट वायर. नाउ फाइनाइट वायर है. करंट इज फ्लोइंग, करंट आई करंट इज फ्लोइंग, इसमें जा रहा है. एंड सेम करंट इज फ्लोइंग इन द दिस जनरल आर्क वायर्स, जनरल आर्क वायर्स. Okay, an angle subtended by this one is theta and theta, and radius is r. Current is flowing in this. Find the magnetic field at center O. B at O. Finite wire के वजह से मालूम है, and ये वाला general arc के वजह से also you know. And check the direction, addition or subtraction, it will be there. करो. Here perpendicular distance नहीं मालूम है, थीटा तो मालूम है, perpendicular distance मालूम. So how to get in terms of r में, in terms of r में चाहिए. R cos theta. R cos theta, yes. देखो ये वाला r का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? R cos theta. This distance is R cos theta. So here A is a perpendicular distance मान लो. So what is A? A is equal to R cos theta. चलो first wire, second wire. So first finite wire के वजह से B1 is, what is the formula? Mu naught by 2 or mu naught by 4 pi into I by distance is A only. Last में करेंगे. Sin phi 1 plus sin phi 2. Sin phi 1 is theta plus sin theta is 2 sin theta, right? Sin phi 1 plus sin phi 2. So sin theta plus sin theta 2 sin theta. Okay, A के जगह में चाहे तो you can substitute R by 2. A is R cos theta, right? R cos theta. So क्या होगा? B1 mu naught by 4 pi into I by R, 2I by R, sin theta by cos theta is tan theta. Okay, this is B1. उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इनवर्ट्स. एंड इसके वजह से ऑल्सो इनवर्ट्स, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐड करना पड़ेगा. ओके,
रिमेनिंग एंगल कितना होगा? दिस 2 थीटा राइट, 2 पाई माइनस 2 थीटा। और जनरल आर्क है, जनरल आर्क, तो B2 म्यू नॉट बाई 2 इंटू I बाई R, ओके, इंटू थीटा बाई 2 पाई राइट, थीटा इज 2 पाई माइनस 2 थीटा बाई 2 पाई। So 2 cancel. So answer is B2 is mu naught by 2 into I by R into pi minus theta by pi. Okay, this is direction is inverse. इसका direction also inverse magnetic field का. So net magnetic field will be simply add करने का B1 plus B2, right? Second shape also almost done, 95% done. और एक एक्सिस का बेस में हो जाएगा तो सेकंड आल्सो शेप का मैग्नेटिज्म डन। ओनली वन शेप रहेगा, सोलेनॉइड, मजा आएगा। कॉपीड। चलो, नाउ विल गो फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। अभी तक सेंटर में ए वाला एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। देखो, दिस इज द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मतलब इट इज लाइक दिस, ऐसा इस फ्रेम में इधर से इसका रेडियस है ए एंड एक्स डिस्टेंस दूर में। आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, so current is flowing in this direction. So ऐसा इस फ्रेम में है, देखो ऐसा इस फ्रेम में है, उसके वजह से एक्सिस में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए करंट कैरिंग वजह से। अभी तक क्या है, सेंटर में भी नो, एक्सिस में भी हाउ टू फाइंड। ओके, हाउ टू फाइंड, विल डिराइव आल्सो हाउ टू फाइंड एक्स डिस्टेंस में। वेदर वी नो कंप्लीट वायर के वजह से एक्सिस में वी डोंट नो डायरेक्ट फॉर्मूला राइट, वी हैव टू फाइंड, बट whenever we don't know, we will take a small element and उसके वजह से magnetic field, who has given that one, which formula we use, because of small current element के वजह से trying to find the magnetic field, which law? Biot-Savart's law। एक ही law है ना, Biot-Savart's law। okay, now इधर से मैं क्या करूंगा, इधर से small dl element कट करूंगा and dl should be in the direction of the current, right, in this direction only we are putting। उसके वजह से I want to find, मान लो r distance, I want to find the magnetic field, small magnetic field at this point P। So dB का फॉर्मूला mu naught by 4 pi into I dl sin theta by r square, right, theta by r square। okay, theta is how much? देखो इस फ्रेम में dl is like this, r is like this। देखो इस फ्रेम में करंट का डायरेक्शन ओनली टेंजेंशियल वी आर टेकिंग इट, दिस इज dl वेक्टर and r vector is like this, this is r, so angle between them is 90। समझ में आ रहा है? इस रिंग dl is like this, r is like this, so angle is 90 दोनों में, so sin 90 by r square। so dB कितना है, mu naught by 4 pi into I dl by r square। okay, now to get the total magnetic field we have to integrate। so before integrating you check once any component is getting cancelled or not। okay, इस इधर थीटा मान लो, इधर थीटा मान लो, एंड दिस इज 90। ओके, इसका डायरेक्शन देखो एक बार, देखो करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स एंड गोइंग इन लाइक दिस, राइट, इट इज कमिंग लाइक दिस एंड गोइंग। सो कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में? कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द magnetic field should be perpendicular to r, right, this dB should be perpendicular to r। समझ में आ रहा है? कंपल्सरी, दैट्स वे, ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा नहीं लगा, r and dB should be perpendicular। समझ में? कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ ना, बट क्या है कंडीशन, क्या है, r से परपेंडिकुलर रहने का। ओके, नाउ टेल मी, दिस इज थीटा, दिस विल बी हाउ मच, दिस टोटल इज 90, दिस विल बी हाउ मच,
This is theta. This remaining angle is how much? Sum of these two angles is 90. 90 minus theta. 90 minus theta. Okay. Now this is 90 minus theta and this is perpendicular. So this angle is how much? 90 है ना? इधर ना? Yeah. Theta. No. Now take the components. dv का इस तरफ component is db cos theta and db का इस तरफ component is db sin theta. We are taking the components and we are checking any component is getting cancelled or not. Okay. Check. Chalo. Now I will take the same opposite symmetrical element. Otherwise we used to integrate directly. But we will check any components getting us component ka we should not add in that integral mein. Okay. Now we will take a small dl element. Same direction में इधर से r distance मान लो. This is theta. Same thing. We'll get db like this. Symmetry की वजह से. In symmetry की वजह से this is theta. तो ऊपर कैसे किया ऐसे ज्योमेट्री किया तो ये थीटा आएगा. This will be 90 minus theta आएगा. Now what is the component? इस तरफ वाला db cos theta and इस तरफ वाला db sin theta. Now which component is getting cancelled? Which component is getting cancelled? Tell me. Cos theta. मतलब if you directly integrate आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ रहा है. सो कॉस कंपोनेंट को निकाल देने का. ओके. ओनली साइन कंपोनेंट इज गेटिंग एडेड. तो अंडरस्टैंड डेरिवेशन थोड़ा लर्न करो आएगा आपको. खेलना मतलब स्मॉल पीस लेना या कैलकुलेट करना आने का. ओके. हाँ. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट व्हाट टू गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड. To get net magnetic field, simply we have to integrate totally db sin theta only. Then only you will get the answer, total magnetic field. And db का value मालूम है, use करो. Net magnetic field is equal to integral mu naught by 4 pi into I dl. So here, sin theta is constant, right? No. Sin theta from this how much? Opposite by hypotenuse. A R. by r, right? A So by it's r. constant. A is Okay. constant, r is constant, right? Constant पूरा दोनों. Now r into r square is r cube. So net magnetic field कितना होगा? Mu naught by 4 pi into I a by r cube. Okay. Integral dl. Okay. Here what is r cube? R cube. R is what? देखो Under Pythagoras root theorem. a square plus a square plus x square whole power 1 by 2 I can write. So r cube means cubing on both sides. R cube will be a square plus x square whole power 3 by 2. Right? Now either I am substituting this one. So net magnetic field is equal to mu naught by 4 pi into I a by a square plus x square whole power 3 by 2 times integral dl milk to circumference of circle only 2 pi a. Right? So pi cancel 2 and a into a square. So final answer आपको learn करना पड़ेगा. B is equal to axis में mu naught I a square by 2 times of a square plus x square whole power 3 by 2. This is the formula for axis. Magnetic field along axis. Mu naught I a square by 2 into a square plus x square whole power 3 by 2. A is a radius, x is a distance. Now tell me, if the point P at the center, x value is how much? If the point P at center, x is how much? 0. Substitute करो x is 0. ये 0 हो जाएगा. A square और cancel हो जाएगा. A cube बचेगा ना. A square एक A बचेगा. So mu naught by 2 into I by A, which is the formula for circular center में. So at center x is equal to 0. Substitute किया तो B at center कितना है? Mu naught by 2 into I by A हो जाएगा. Because cancel हो जाएगा पूरा. So axis का फॉर्मूला बाहर करो.
mu naught I a square by 2 into a square plus x square whole power 3 by 2. Because दूसरा curl the fingers in the direction of current, thumb indicate the direction of magnetic field. Magnetic field is like this, right? In this direction में कितना कैसा होगा? इधर magnetic field कितना है? Which direction? It is like this or like this? If I extend prolong करूंगा, same circular wire के वजह से same direction of current only. इस डायरेक्शन से दिख रहा है आपको. Curl the fingers direction of current, thumb indicate direction of magnetic field. इधर कितना होगा? Which direction होगा magnetic field? Okay, so देखो direction of magnetic field is same on both sides of the loop. दोनों में direction is same. Okay, so this is a circular current carrying loop. This axis, we know curl the fingers in the direction of current, thumb indicate the direction of magnetic field. So magnetic field is like this in this direction. Either be, suppose if I put a wire, again curl the fingers, everything will be same. Both the direction is same. Magnetic field is same in both the axis. Either. That is important. Okay. Now we'll find the point. Okay. We find a point on the axis of the loop where B is maximum. I want maximum magnetic field किधर होगा? कौन सा point में maximum magnetic field होगा? See B तो formula मालूम है x में. So maximum कौन सा point में? Okay. So B का formula क्या है? याद हो गया? कल में mu naught I a square by 2 times of a square plus x square whole power 3 by 2. Okay. B maximum होने के लिए a square plus x square should be maximum minimum. Tell me. B maximum होने के लिए a square plus x square should be maximum minimum. Because denominator है ना minimum. In these two values में which is constant? A या x? Which is constant? A. A. Because circular का radius is same. Okay. Now ये minimum होने के लिए x square should be minimum. And what is the minimum value of x square? Tell me. What is minimum value of x square? ऐसा कौन सा value लगाओ minimum होगा? 0. 0. So if x square is 0, that means x is 0. That means if I substitute here, B maximum I want. B maximum है mu naught I a square by x is 0 लगाए तो a square cancel, a cube होगा 2a cube. So a square a cancel. Therefore mu naught by 2 into I by a. किसका फॉर्मूला ये वाला? सेंटर का. That means maximum at the center magnetic field. Circular coil center में maximum है. As we go away, it decreases. Magnetic field decreases. At infinity में x is infinity, b वैल्यू कितना होगा? At बहुत दूर में infinity x वैल्यू कितना होगा? 0. X is infinity रखने से magnetic field is almost 0. Okay, 1 by infinity is 0, right? Okay. Okay, then now graph taking इसका graph of b axis versus x.
This is a positive x, negative x. This is magnetic field B. This is 0 origin. तो सेंटर में क्या होगा? सेंटर में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है. एज वी गो अवे वेरी फार में मैग्नेटिक फील्ड इज 0, राइट? सो इधर से ऐसा ग्राफ आएगा. द ग्राफ as we go away it is becoming 0 and center में the magnetic field is maximum and maximum value formula मालूम है, mu0/2 into I by A. This is for one single loop. अगर n टर्न्स है तो n लूप्स होगा, आपको जो फॉर्मूला लगाया एक्सिस में इंटू n करने का. वैसे साथ ही कौन वीडियो प्योरली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है अभी तक. ओनली स्ट्रेट वायर्स वी स्टडीड एंड सर्कुलर वायर इज गोइंग टू कंप्लीट. ओके कवर. चलो नाउ इसका पर n टर्न्स में फॉर्मूला डाल लो. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? mu0 I A square by 2 times of A square plus x square whole power 3/2 in times n. Right? If n turns it. So always we are learning for one coil, then आपको n turns का n का. So इसका क्वेश्चंस हम लोग करने वाला है नेक्स्ट क्लास में. पूरा का क्वेश्चंस खत्म किया तो पूरा सेकंड कॉइल का डन, सेकंड शेप का डन. ओनली सॉलिनॉइड बचा है. सॉलिनॉइड में ओनली एम्पियर सर्क्यूट लॉ विल बी कमिंग. ओके सो एम्पियर सर्क्यूट लॉ इन सॉलिनॉइड का किया तो कंप्लीट मैग्नेटिज्म डन. देन वी हैव टू गो फॉर मूविंग चार्जेस.